Good afternoon, students. Welcome to my history class. Yesterday we have learnt about the political changes in the medieval period. We will go a quick recap what we learnt yesterday. We have learnt about the Rajputs. It was a group of people who were warriors and they belonged to Kshatriya community, Kshatriya caste, and they were known for their valor and loyalty. And other groups of people are also very popular, become very important. Among them are Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and Kayas. This we have discussed yesterday. Okay. We have also discussed that some important Rajput kingdoms were there at that time, early medieval period, and these Rajput kingdoms were become powerful, but they were always constantly at war with each other. ये सारे राजपूत किंगडम एक दूसरे से हमेशा वॉर में रहते थे, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं. और ड्यू टू दिस वीकनेस मेनी फॉरेन इन्वेजन्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस. नाउ व्हाट वी सी, there was a Rajput king, very famous Rajput king, Prithviraj Chauhan. He was defeated by the Muhammad Ghori. Who was Muhammad Ghori? Muhammad Ghori was an ambitious ruler. He doesn't belong to India. He was a foreign invader. He was very ambitious ruler. And what did he do? He defeated the Rajput king Prithviraj Chauhan in the Battle of Tarain. उसने मोहम्मद गौरी ने राजपूत किंग जो था पृथ्वीराज चौहान उसको हरा दिया. मैंने इसके पहले रीज़न बताया था, बिकॉज द राजपूत्स वर कॉन्स्टेंटली इन बैटल विथ ईच अदर, सो दे वर नॉट यूनाइटेड. दैट इज़ वाई द फॉरेनर्स फाउंड एन ईजी वे टू अटैक देम. जब हम कमज़ोर होते हैं तभी तो हमारे पर कोई अटैक करता है, राइट? सो फॉर दिस रीज़न इंडिया वॉज attacked by many foreign invaders. Okay. Now, so the attack of Muhammad Ghori, what was the effect of the attack of Muhammad Ghori? जब उसने हरा दिया राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, then what happened? This incident brought India under the slave dynasty. इसके बाद क्या हुआ? भारत में slave dynasty का आरंभ हुआ. मोहम्मद गौरी wanted to set up an empire in India. बहुत से फॉरेन इन्वेजर्स थे जो यहाँ की सारी संपत्ति को बस लेना चाहते थे, बट मोहम्मद गौरी वॉज डिफरेंट. ही wanted to set up an empire, तो अपना साम्राज्य यहाँ बनाना चाहता था. दैट इज वाई ही कम हियर एंड ही स्टार्टेड टू एक्सपैंड हिज किंगडम. So now let me tell you about, in very short, what is slave dynasty. Slave dynasty, you will know it in detail in the next chapters. Slave dynasty is a dynasty whose first sultan was Qutbuddin Aibak. Qutbuddin से कुछ याद आया? कुतुब मीनार in Delhi, it was constructed during his reign. इनके रूल के टाइम ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था. So you can identify it easily now. So slave dynasty is a dynasty whose first sultan was Qutbuddin Aibak. Why it was called slave dynasty? Because its ruler जो Qutbuddin Aibak था वो मोहम्मद गौरी के आर्मी में एक जनरल के रूप में काम करता था. उसके समय में स्लेव रह चुका था वो, राइट? So that is why it is called slave dynasty. After the fall of slave dynasty, fall means पतन. किसी भी साम्राज्य का, किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसका अंत होता है. So many dynasties come and go. Okay. So after the fall of slave dynasty, what happens? The following dynasties came. I will read out one by one. Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and Lodi dynasties. So first dynasty, slave dynasty, then all the
डायनेस्टीज फॉलोड आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद खलजी, तुगलक, सैयद और लोदीज। व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन देम? ये सारे के सारे जो है दिस टाइम पीरियड, ये जो भी डायनेस्टीज आई, इस समय को सल्तनत पीरियड कहा जाता है, या इसको दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। ठीक है, सो हमने देखा कि अब भारतीय जो ओरिजिनली जो भारतीय थे, अब उनका रूल नहीं है इंडिया में ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। नॉट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया बट सम पार्ट ऑफ इंडिया द फॉरेन इन्वेजन्स वर स्टार्टेड। So I have talked about Delhi Sultanate. I have talked about different dynasties, slave dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, etc. So I have talked about the last dynasty is Lodi dynasty. Delhi Sultanate में last जो dynasty थी वो थी Lodi. तो the last ruler of Lodi dynasty was Ibrahim Lodi. And what happened to Ibrahim Lodi? He was killed by Babur. And who is Babur? Babur is a ruler of Central Asia. He came to India and he invaded India, came to India and he defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat, which was fought at the time of 1526. Clear? तो आपने देखा कि एक साम्राज्य के बाद दूसरा साम्राज्य बन रहा है. वन एम्परर इज डिफीटिंग अनदर वन. सो नथिंग इज कांस्टेंट ओवर हियर. सो दिल्ली नाउ हैड अ न्यू रूलर. अब दिल्ली में एक नया रूलर आ गया. कौन आ गया? बाबर. इट वॉज बाबर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. अब बाबर ने क्या किया? ही लेट द फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का मतलब होता है नींव डालना. नींव मतलब शुरुआत करना. तो उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, शुरुआत की. ओके, बाबर लेट द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. नाउ Mughals were the empire, the time period of Mughals is very important in India, and many changes happened during this Mughal period. The Mughals ruled over India for more than 300 years. मतलब 1526 में it is all started and it continued till the coming of Britishers in India. Okay, in this part up to this only. And I hope you are getting my points better, and I hope you are going through the lessons properly, and I need your feedback. Okay, see you in the next class.